हेलो बच्चों, मेरा नाम हरिओम है और हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11th की वीडियो सीरीज देख रहे हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स और भी देख चुके हैं, जिसमें हमने इनिशियली देखा था फर्स्ट प्रोग्राम। उसमें हमने देखे थे कैसे हमने num1 num2 वेरिएबल्स और उनका सम एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर किया था। उसके बाद हमने देखे थे व्हाट इज वेरिएबल एंड देन आफ्टर द नेम ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड आइडेंटिफायर, name of the variable function or constant called identifier. That means num1 is an identifier and also an variable which can store some value. और जब हमने आइडेंटिफायर्स का जिक्र किया था और जब हमने आइडेंटिफायर्स पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था कि these should not be keywords और रिजर्व वर्ड्स। तो कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स होते क्या हैं? टुडे विल सी इट। So, keyword and reserved words are nothing but the word which having special meaning in this language, in the Python language. So, keyword are reserved word with specific meaning or special meaning. It can be used in our program only for the purpose of which it has been defined. That means for what they have defined, we can use those keywords only for that only, not for the keyword, not for the generic variable or nothing else than that. Python is case sensitive. Keyword must be written exactly as given. Python is a case sensitive language, so it is a property of the Python. That means अगर कीवर्ड में एफ कैप्स में है तो ये स्पेशल मीनिंग रखता है और दिस शुड बी रिटन एज इट इज। एफ कैप्स में फॉल्स हैविंग वन मीनिंग, और इसको अगर स्मॉल में लिख दिया देन इट इट कैन बी, इट विल नॉट बी अ रिजर्व वर्ड एंड यू कैन यूज एज यू लाइक। सो कीवर्ड क्या होते हैं? दैट मीन्स कीवर्ड इज हैविंग ए स्पेशल मीनिंग एंड these keywords are case sensitive and it can be used in the program only which it has been defined on the purpose for which these are defined, not anywhere else. This is all about the keywords. So we are having list of keywords here. So they are having some meanings. Maybe we can discuss it later, but in short, you can see like false and true is a binary boolean, as a boolean they can be used, and okay, I'll explain it when we are going to use or write the small programs, maybe second or I mean, sixth or seventh unit. Right now if I'll explain you cannot understand it, so please share, subscribe this video to get more and more student benefited with this. Thank you. Bye.